अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ इस वक्त एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं दारुल उलूम देवबंद के हवाले से कि क्या दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेजी जुबान नहीं पढ़ाई जाती है। इन दोनों गोदी मीडिया में, इंटरनेशनल समेत नेशनल मीडिया में दारुल उलूम के हवाले से ये खबर शाया की जा रही है कि दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेजी जुबान नहीं पढ़ाई जाती है। और दरअसल ये पूरा हंगामा खड़ा किया गया, क्रिएट किया गया दारुल उलूम देवबंद के एक ऐलान के बारे में। दारुल उलूम देवबंद ने अपने तलबा की तरबियत के हवाले से एक नोटिस इशू किया था, जिसमें कहा गया था कि दारुल उलूम देवबंद के तलबा तालीम के औकात में अपनी तालीम पर तवज्जो दे, कोई दूसरी एक्टिविटीज ना करे, खा बाहर ट्यूशन पढ़ना हो इंग्लिश के लिए या कंप्यूटर सीखना हो या कोई और करना हो। लेकिन होता क्या है कि मदरसे के बच्चे मदरसे की तालीम के दौरान दूसरी एक्टिविटीज में मुलव्विस हो जाते हैं, मसरूफ हो जाते हैं। दारुल उलूम देवबंद ने इस पर पाबंदी लगाई, लेकिन मीडिया ने इसको अलग रंग दे दिया। और मीडिया का एक कारोबार भी है, क्योंकि उनकी बिजनेस इसी से चलती है। खैर, दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा इदारा है जिसको 150 से साल ज्यादा हो चुके हैं और दुनिया के मुख्तलिफ उलूम व फनून में शोबे में दारुल उलूम देवबंद की खिदमत है। और इस वक्त अंग्रेजी जुबान में भी दारुल उलूम देवबंद की खिदमत नुमाया तौर पर आ रही है। दारुल उलूम देवबंद के फैज़ याफ्ता हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अंग्रेजी जुबान के जरिए मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, इल्म दीन की खिदमत कर रहे हैं, मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। और उनकी वजह से मुल्क का, देश का, भारत का नाम हर जगह रोशन हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में कुछ ऐसे ही लोग मौजूद हैं जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद से पूरी तालीम हासिल की है और उसके बाद वो दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में कारनामा अंजाम दे रहे हैं। आइए मैं पहले आपको अपने पैनल में मौजूद शख्सियात से मिलवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब। आप मरकजुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, आप सहाफ़ी भी हैं। इसके अलावा ईस्टर्न क्रिसेंट के आप चीफ एडिटर हैं, जो अंग्रेजी जुबान में एक मेयारी मंथली मैगजीन मानी जाती है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अजमल कासमी साहब मौजूद हैं, आप दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबे अरबिक में। इसके अलावा हमारे साथ मौलाना अफसर अली कासिम मौजूद हैं, आप अमेरिका में हैं और वहाँ आप अंग्रेजी जुबान में अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल रशीद कासमी साहब। आप कानपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आप हक एजुकेशन रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा भी कई सारी सरगर्मियां हैं, इस्लामिक फिक़्ह पर आप रिसर्च करते हैं और मुतअद्दिद तरह की सरगर्मियों का आप अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मुदस्सिर अहमद कासमी, आप सहाफ़ी हैं, कॉलमनिस्ट है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े उर्दू अखबार रोजाना इनकलाब में आपका कॉलम आता है, उर्दू में भी वीकली और अंग्रेजी में रोजाना इनकलाब में द मैसेज के उन्वान से आपका कॉलम आता है, मुंबई इनकलाब में आप देख सकते हैं। और आपकी एक और आपके तारुफ का हिस्सा यह है कि अल गजाली इंटरनेशनल स्कूल अररिया के आप डायरेक्टर हैं और इस वक्त आपने हमें अररिया से ज्वाइन किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिफ्जुर रहमान कासमी, जिनको हाल ही में जेएनयू से पीएचडी की डिग्री मिली है और ईगल एकेडमी के आप डायरेक्टर हैं, अंग्रेजी जुबान पढ़ाते सिखाते हैं। तो इन तमाम पैनलिस्ट के साथ हम बातचीत करेंगे कि क्या दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेजी जुबान नहीं सिखाई जाती, क्योंकि जो मीडिया कह रही है कि दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेजी जुबान नहीं सिखाई जाती है। तो ये जो हमारा पैनल है ये खुद बता देगा कि दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेजी जुबान पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। हमारे पास इस वक्त तकरीबन सैकड़ों किताबें मौजूद है जो दारुल उलूम देवबंद के फुज़लाए किराम की है, उन्होंने अंग्रेजी जुबान में लिखी हुई है और आगे कुछ हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद में जो तनाज़ुर है उसकी असलियत क्या है। आपने वो नोटिस देख ही लिया होगा, मैं दोबारा उस नोटिस को रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन इस बीच दारुल उलूम देवबंद के मोहतमी मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी का एक वजाहती बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दारुल उलूम देवबंद के उस नोटिस का मकसद क्या है। उसके बाद फिर हम अपने पैनलिस्ट से बातचीत करेंगे, तो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। एसडीएम साहब, मैं अबुल कासिम नौमानी, मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, आपके सामने आजकल जो एक न्यूज़ चल रही है जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, उसके बारे में स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। चंद रोज पहले यहाँ पर तलबा को समझाने के लिए एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें बच्चों को ध्यान लगाकर पढ़ाई करने के पर जोर दिया गया और पढ़ाई के अलावा जो दूसरी सरगर्मियां उनसे बचने की ताकीद की गई। उसी सिलसिले में ये भी कहा गया कि दारुल उलूम का जो कोर्स है उसमें पूरा वक्त दें, तैयारी करें और ध्यान लगाकर पढ़ें। जो बच्चे दारुल उलूम में दाखिल हैं, यहाँ के हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन बाहर कोचिंग सेंटर में जाकर अंग्रेजी पढ़ते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, जैसे कोई दुकान लगा रहा है, कोई मेवा बेच रहा है, उन सब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है।
उसी खबर को इस अंदाज से पेश किया गया जिससे मालूम होता है कि दारुल में अंग्रेजी पढ़ाने पर पाबंदी, हालांकि ऐसा नहीं है। खुद दारुल में अंग्रेजी पढ़ाने का एक विभाग है, 3 असातिज़ा उसमें काम कर रहे हैं, 20-20 तलबा दोनों साल में पढ़ रहे हैं और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख कर जाते हैं। कंप्यूटर सिखाने का यहाँ सिस्टम है। प्राइमरी दर्जात में अंग्रेजी, हिंदी, जोग्राफिया, साइंस, सोशल साइंस और ये तमाम के तमाम जो असरी उलूम में सिखाए जाते हैं। इसलिए जिस अंदाज से खबर चलाई गई ये गलत है। दारुल न अंग्रेजी जुबान का मुखालिफ है, न हिंदी जुबान का मुखालिफ है, न किसी और चीज़ का। यहाँ सिर्फ ये पाबंदी है कि जब तक आप आलिम फाजिल का कोर्स कर रहे हैं उसका जो निज़ाम है, जिस वक्त में जो काम करना उसको कीजिए। आप कोचिंग सेंटर में या किसी ट्यूशन में जाकर अपना वक्त बर्बाद न कीजिए। मैं समझता हूँ कि इस वजाहत के बाद अब ये जो गलतफहमी फैली हुई ये दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी को, जिन्होंने तफसील बताई कि नोटिस का मकसद क्या है और दारुल उलूम देवबंद में खुद अंग्रेजी का शोबा मौजूद है। खैर, हमारे साथ मौजूद है मौलाना बुरहानुद्दीन कासिमी साहब। मौलाना, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि मोहतमिम साहब ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद में खुद अंग्रेजी का शोबा मौजूद है, इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि 1994 में ही मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने मरकजुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया था और इस वक्त कई सारे इदारे उस नौयत के देश भर में चल रहे हैं। तो आप जरा हमारे ऑडियंस को, नाजरीन को तफसील बताएं कि कब, कैसे दारुल उलूम में और उससे पहले अंग्रेजी का बाज़ाब्ता शोबा शुरू हुआ, किस तरह तालीम दी जाती है। सबसे पहले मिल्लत टाइम्स के तमाम नाजरीन को बहुत बहुत वेलकम और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे अंग्रेज़ी में बोलने की इजाज़त दे, क्योंकि इट्स समथिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज either Dalum is allowing, and some media houses has already published that Dalum has given fatwa against the English language, or Dalum has banned English and it is going to punish its students for learning English as a language. So I would prefer to speak in English so that this phobia or this wrong notions can be removed from the audiences at least. Myself, as you have introduced, I'm an alumnus of Darul Deoband, the very Darul Deoband, which is at the media scanner due to wrong understanding or propaganda of certain media houses. So I completed 7 years there. I studied 7 years there. Thereafter, I joined Markazul Maarif Education and Research Center in New Delhi, which was established by none other than a member of Majlis Shura of Darul Deoband and alumnus of Darul Deoband, Maulana Badruddin Ajmal Al Qasmi Saab from Assam, who is a philanthropist, a social worker, and presently a famous politician, alhamdulillah. So we studied English as a language for 2 years, and thereafter, since 1997 onwards, I started writing in English, and till date I am writing in English as an English poet, as an author of English textbook. Believe me, people are saying Dalum is not allowing its student to learn English, and we are writing English textbook to learn that language. And not only me, at least 10 of the Dalum's alumni have already produced book on English language, not on theology or sociology or history or anything else, English language itself. So Dalum is not was and not had been against any language ever in the period of history. Since the beginning of Darul Deoband, its own founder, Maulana Qasim Nanatawi, has shown interest that English as a language should be studied, should be read, if the facilities and the atmosphere is available. And Hazrat Maulana Qari Usman Sahab Damat Barakatuhum, who is passed away just 2 years ago, was the assistant
Vice Chancellor of Darul Deoband and President of Jamiat Ulama Hind, he composed a book on that about the notion and concept of Dalum vis-a-vis English language. On that book, he quoted the resolution from the Shura back in 20th century, that Shura has already passed the resolution that Dalum should provide English language education to its students, providing the scholarship with the scholarship. However, that could not have been have been materialized due to lack of funds and infrastructure. Later on, that Shura allowed its member Maulana Badruddin Ajmal with the visionary thoughts and ideas from Hazrat Maulana Sayyid Asad Madani Rahimahullah, and Markazul Marif Education and Research Center was started in 1994. So in short, we are not here to showcase or promote what we are doing and what we have been, but it is a wrong propaganda. It's absolutely rubbish. I can say the least that it is funny that some of our media houses are taking this notice of Darul Deoband, which was particularly about a student. It is obvious we are teachers, we are academics, we know if somebody has enrolled in a certain institution to avail a particular course, then that institution disallow or that institution discourage a student to go beyond the premises of the institution and avail private coaching. For example, a professor of JNU is here. If any student who is a regular student in JNU and the administration comes to know that this student is availing private coaching from certain corporate houses, then obviously the facilities, the lodging, the fooding, the everything that the institution is providing is going into waste. So Dalum just tried to avoid this wastage of national resources and it tries to encourage students to focus on their own curriculum for that for which they have enrolled or got admission at Darul Deoband. So it was nothing, and I also came to know. Allow me a few seconds. I also came to know that the Minority Ministry of the UP government and the Child Right Ministry also, they have noticed Darul Deoband. So hearing these all things as reported by the Hindu and Indian Express today, hearing all these things, we just feel sorry that people are not able to understand the context of certain notice, and they are declaring it as fatwa. So common people should come forward and learn what Dalum and Dalum alumni have been doing in English language around the world, and they are faming, they are naming, and they are doing great jobs. Thousands of books are already published in English, and at least hundreds of researches have been done in English, where JNU, DU, MU, JMI, Guwahati University, Kolkata University, Mona Azad University, in every university, someone one or the other is teaching right now, and they are the alumnus of Darul Deoband. What to speak about English language? Everybody is working in English only. Here, Maulana Afsar is Maulana Mudassir, Dr. Hifzul Rahman, Dr. Ajmal. Everybody is working in English language. Their means of communication, their means of earning, their means of job is English language. So they are doing everything, and these are the very alumni of Darul Deoband. या बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से आगाह किया कैसे हुआ, और उसूल है कि कोई अगर कहीं रेगुलर क्लास करता है तो जा भी नहीं सकता। जेएनयू से मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर अजमल कासमी साहब। डॉक्टर साहब, क्या होता है, कोई स्टूडेंट्स अगर जेएनयू में या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो क्या किसी यूनिवर्सिटी में किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हुए, और जब वो उसके हॉस्टल से भी फायदा उठा रहा हो, क्लासेस भी उसकी हो, दाखिला हो बाज़ाब्ता, तो क्या किसी दूसरी जगह वो ट्यूशन कर सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, जॉब कर सकता है? क्या है उसूल और ज़ाब्ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
First of all, I would like to thank Miller Times, Janab Shams Tabriz Qasmi Sahab, and all the panelists present on the screen. Actually, the notice that was displayed by Darul Uloom Deoband at its display board that made a mayhem throughout the country because of the wrong, share of the students this unit, this notice to every group or every individual. I myself had been in Darul Uloom Deoband since 1991 till 1996. And in that very period, I studied English, maths, and also I learned the typing of English language, Hindi language, Urdu and Arabic from outside. And there was no any restriction from Darul Uloom Deoband. Apart from this, at that point of time, we also do not waste our time from our regular academic activities of Darul Uloom Deoband, because maybe there can be a reason behind this, that the social media was not at that point of time. That is why mobile was not there, this Twitter was not there, Facebook was not there, the WhatsApp was not there, even these smartphones were not available at that point of time. That's why maybe it might be a reason. But we were very serious in our academic activities. At the same time, we used to go outside from having lunch till the namaz of Zuhr, the Zuhr prayer. We go outside, learn our extra activities, do our extra activity along with learning English language. I did myself at that point. And after passing from Darul Uloom in 1996, I went to the Aligarh Muslim University. I studied there and got the degree of Masters in Arabic. And there, the study of English in Darul Uloom Deoband, in Deoband, it made me a lot, as far as my, university career is concerned. So Darul Uloom Deoband never, banned, never restricted anyone from learning any language. But I had come to know that Sanskrit was one of the subjects of the curricula of Darul Uloom Deoband in the beginning, at the starting time of Darul Uloom Deoband. Maybe later on, the subject Sanskrit was removed. We don't know, because there should be the learners, the takers. So since the takers were not there, that's why it was removed. But Sanskrit was taught in Darul Uloom Deoband, and the English, the course which is being run from 1993 onwards till now, it made the Darul Uloom Deoband Fuzala throughout the world, who is serving throughout the world. Even one of our panelists is serving his duties, or discharging his duties as far as English language is concerned, in Atlanta. Janab Maulana Afsar Ali Qasmi Sahab. So it is the apparent evidence in front of us. So Darul Uloom Deoband never stops any time, but there should be some rule and regulations for the regular students, that those who are very serious in the theologies, exegesis, and the hadith, learning, so they should devote their time for that very courses in Darul Uloom Deoband. And at that very point of time, they should not take any part in any English course outside Darul Uloom Deoband. If those who want to learn any English, so they can take the course after getting the degree of Fadila, the 2 years, regular 2 years, and then there is no problem. Darul Uloom itself is offering this, English language course in the campus. It has the particular department of English language. And in the beginning, the Darut Tarbiyah, that we know Darut Tarbiyah, from that very Darut Tarbiyah, from the class 1 till 5 or 6, English, mathematics, geography, these courses are being taught till now. So there is no restriction. So the notice and the media
hype or media vibes that is being created through the mainstream media. It is totally baseless. It is to to defame Darul Uloom Deoband, and the deplorable approaches of the mainstream media is completely by myself I can denounce it. So this should not be done. It is only to make propaganda, to spread a notion against Darul Uloom Deoband throughout the world. So this is what I would like to say, that Darul Uloom Deoband doesn't doesn't restrict anyone to learn English language. So this is what I wanted to say. बिल्कुल Thank आपने you very सही much. कहा कि दारुल ने इस नोटिस के जरिए इंग्लिश सीखने की मुखालफत नहीं की है, बल्कि एक ज़ाब्ता और उसूल के तहत क्या है जो ज़रूरी है। हमारे साथ Exactly. मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद कासमी साहब मौजूद है। मुफ्ती साहब, जहाँ हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि दारुल उलूम ने अंग्रेज़ी सीखने की मुखालफत नहीं की है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो बच्चे अंग्रेज़ी सीखने बाहर इस वजह से जाते हैं क्योंकि दारुल उलूम के सिलेबस में अंग्रेज़ी नहीं है? एक अंग्रेजी वो है जिसको पढ़ कर के आप जैसे लोग अंग्रेजी जुबान में बोल रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, ये आला मियार है किसी जुबान के सीखने का। दूसरी तरफ अंग्रेजी इतना सीखना जरूरी है हर स्टूडेंट के लिए, हर शख्स के लिए कि वो अपना फॉर्म सबमिट कर सके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सके, कहीं जाए तो शाइन बोर्ड को लिखा पढ़ ले, क्योंकि हर जगह अंग्रेजी जुबान आती है और बेसिक अंग्रेजी सीखने के लिए ही बच्चे बाहर जाते हैं। और वजह यह है कि दारुल उलूम के सिलेबस में बेसिक अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि दारुल उलूम देवबंद को भी थोड़ा-सा अपने सिलेबस में तब्दीली लानी चाहिए, 1-2 घंटा अंग्रेजी का रखना चाहिए? मुफ्ती अब्दुल अऊज़ु रशीद साहब। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में एक आयत है, वमिन आयातिही इख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अनवानिकुम व अलवानिकुम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिन आखर व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास। कुरान में तो खुद तमाम ज़बानों का ज़िक्र है कि ये ज़बानों का इख्तिलाफ अल्लाह की तरफ से है, और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनसब बयान किया गया है कि लितुबय्यिना लिन्नास, आप इन तमाम चीज़ों को तमाम इंसानों के लिए बयान करें, तो ज़ाहिर है कि इसमें दुनिया की सारी ज़बानें आ जाएंगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दारुल उलूम किसी ज़बान को मना करे? अलबत्ता एक मैनेजमेंट होता है दारुल उलूम में, जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि 6 साल तक तो खुद वहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है, उसके बाद 8 साल जो कोर्स है उसमें हर जगह का कुछ उसूल होता है। कोर्स है, मिसाल के तौर पर एक पैजामा है तो उसे एक ही आदमी पहनेगा, 2 आदमी तो नहीं पहन सकते। अगर वो इंटर के बाद उसे जेई का या नीट का उसे करना है तो जाहिर बात है एक ही कोर्स कर सकेगा, एक साथ 2 कोर्स तो नहीं कर सकता वो। तो हर जगह का कुछ मैनेजमेंट का एक उसूल होता है, तरीक़ा होता है। ज़ाहिर बात है जब दारुल उलूम ख़ुद पहले भी पढ़ा रहा है और फ़ारिग होने के बाद भी दारुल उलूम ने 2 साला कोर्स पढ़ाने का ऐलान और बाकायदा आज से नहीं 15-20 साल से चल रहा, तो दारुल उलूम ख़ुद कैसे मना कर देगा? इसको हम बिल्कुल यूँ समझ सकते हैं जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक मरतबा हमारा जाना हुआ, तो अपने बेटे के ताल्लुक़ से पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो बाहर कुछ बच्चे हिंदी बोल रहे थे, तो वहाँ की मैम ने कहा डोंट स्पीक हिंदी, ओनली इन इंग्लिश, से सॉरी, यानी तुम माफ़ी मांगो कि तुमने हिंदी में कैसे बात कर ली, इंग्लिश में तुम्हें बात करना चाहिए। तो ये तो एक हर जगह का एक उसूल होता है। हमारे यहाँ खुद दारुल उलूम में मिसाल के तौर पर जो अरबी की क्लासेस हैं वहाँ ये होता है कि आप उर्दू मत भूलें, जो इंग्लिश की क्लास है वहाँ होता है कि आप अरबी और उर्दू मत बोलें। तो हर जगह का कि ये हर जगह का एक उसूल होता है। ऐसा कुछ दारुल उलूम के जो नोटिस है वो बिल्कुल हर्फ बहर्फ सही है। नोटिस होती है, वो ऐलान नहीं होता कि सारी तशरीहात हो जाए। जाहिर बात है कि नोटिस में जो बात कही गई है वो बिल्कुल बरहक है, सही है। अब अगर किसी को कोई इश्काल है तो उसके एक्सप्लेनेशन, उसकी जो तशरीह होगी उसका ताल्लुक दारुल उलूम के अथॉरिटी को हासिल होगा कि वो उसकी एक्सप्लेन करें। तशरीह का हक़ इदारे को होगा, तो इसका ताल्लुक मैनेजमेंट के से है। अच्छा, रहा ये कि जो दारुल उलूम ने मना किया है वो भी इंग्लिश के हक़ में मना किया। होता ये है कि जो बच्चे इस तरह इंग्लिश थोड़ी देर के लिए जाते हैं, वो चंद वर्ड याद कर लेते हैं और वो अपने आप के समझते हैं कि हमें बहुत इंग्लिश आ गई, इसकी वजह से फिर आगे फर्दर स्टडी इंग्लिश के नहीं करते वो। तो दारुल उलूम ने इसलिए मना किया है कि भाई तुम मुस्तकिल तौर पर इंग्लिश पढ़ना, और दारुल उलूम ही की ये शाखें, मिसाल के तौर पर MRC है, खुद हमारा इदारा हर्फ है, अल्हम्दुलिल्लाह 50 बच्चे एट ए टाइम पढ़ते हैं, 25 एक साल, फिर 25 एक साल। और यही कि हम आपको दिखाएं कि यहाँ के लोगों ने खुद इंग्लिश में एतदाल का रास्ता, इफराद व तफरीद, एक्सट्रीमिस्ट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रिलीजन, ये देखिए आप ये देख सकते हैं। एसेंस ऑफ इस्लाम, नमाज के मकसद और अहमियत, ये देख सकते हैं, ये यहाँ के लोगों ने लिखा है। इसी तरीके से
یہ لیٹر ٹو دا ایڈیٹر، جو اخباروں میں جو لیٹر لکھے گئے ہیں، یہ لیٹر باقاعدہ یہاں کے طلبہ نے بھیجے ہیں اور جو انگلش میں چھپے ہیں، یہ دیکھیے آپ کے سامنے. اسی طریقے سے اختلاف رائے، یہ دیکھیے، یہ خود یا حرف میں جو چیزیں انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی، اسی طرح انسانیت کا پیغام، ہیومن، تو یہ سب یہیں کے دارالعلوم کے الحمدللہ فضلہ نے ان چیزوں کو تیار کیا ہے. اسی طریقے سے یہ ہم لوگ خود پڑھاتے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دارالعلوم خود ایک چیز کی تلقین کرے کہ بھائی آگے بڑھو، تم مین اسٹریم میں شامل ہو، اور خود اس چیز کو منع کر دے؟ یہ بلا وجہ کا بات کا بتنگڑ. اور ہمیں امید ہے کہ جب ان لوگوں کو اتھارٹی کے سامنے یہ بات آئے گی تو خود شاید ان کو ہنسی آئے، وہ خود سوچیں گے یار یہ کیا چیز ہے. تو اس لیے میری بات کا ٹائم پورا ہو رہا ہے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خود قرآن میں زبانوں کا ذکر ہے، خود اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس تعلیم کو تمام زبانوں میں ایکسپلین کریں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے دارالعلوم منع کریں؟ ہاں، جس طریقے سے انگلش میڈیم اسکول میں ہندی بولنا منع ہوتا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم لوگ اپنے یہاں منع کرتے ہیں کہ آپ اردو میں بات مت کریں، صرف انگلش اور ہندی میں بات کریں، کیونکہ ہمارے انگلش اور ہندی سکھائی جاتی ہے، تو ہم نے اردو پر بین لگایا ہوا ہے. تو آپ کوئی اردو والا کہہ دے کہ صاحب آپ کو اردو سے دشمنی ہے. تو یہ تو ایک مینجمنٹ کا، ایک بچوں کو اس میں بہتر انداز میں پرفارم کر سکے، بہتر انداز میں وہ زبان سیکھ سکے. پوری دنیا کا یہ کلچر ہے کہ اگر کوئی چائنیز سیکھ رہا ہوگا تو وہاں پر ظاہر بات ہے دوسری زبان پر پابندی ہوگی، کوئی انگلش سیکھ رہا ہوگا. تو اس تعلق سے دارالعلوم کا نوٹس ہے، دارالعلوم کا نوٹس حرف بار صحیح ہے، اس میں کوئی اپولوجی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل برحق ہے، اور اس نوٹس میں پوری تشریحات نہیں آ سکتی. باقی الحمدللہ مفتی ابوالقاسم صاحب دارالعلوم کے محتمین، انہوں نے وضاحت کر دی ہے، باقی اور جی وضاحت آ جائے گی. یہ انشاءاللہ جی اس تعلق سے تمام چیزیں بے غبار ہو جائیں گی اور صاف ہو جائیں گی. جی بالکل. ہمارے ساتھ مولانا افسر علی قاسمی صاحب امریکہ سے موجود ہیں، اور مولانا افسر صاحب شاید آپ سفر میں لگ رہے ہیں، مجھے ہم رک جائیں تو بعد میں ہم آپ کے پاس آئیں گے. اس بیچ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بشیر احمد قاسمی صاحب. آپ الغزالی انٹرنیشنل اسکول بحریہ کے ڈائریکٹر ہیں. اور ان کا مائک کھلا ہوا ہے کیا؟ مائک ذرا دیکھیں کسی کا کھلا جی ہے کیا؟ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بہت زیادہ ڈسٹرب. جی افسر صاحب جو ہے نا وہ ایئر فون کھول کر کے بات کریں گے تو میرے خیال میں آواز صاف ہو جائے گی. وہ ان کے ایئر فون کی وجہ سے آواز پریشانی صاف ہو ہو رہی گیا، آواز صاف ہو گیا. میوٹ کر لے جن جی کو بولنا ہے، اوکے خالی نہیں بولنا. اوکے اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی افسر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، خود امریکہ میں پہلے تو میں چاہوں گا ذرا صاحب بتائیں کہ کیسے آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی، امریکہ جیسے دیش میں ہیں اور آپ باضابطہ خدمات انجام دے رہے ہیں، تو ہمارے آڈینس کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ خود اپنی تھوڑی سی روداد بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So first of all, I would like to thank Millet Times for giving me the opportunity to participate in this panel discussion. So my full name is Afsar Ali Qasmi. I am the Imam here at Masjid Umar bin Abdulaziz in Metro Atlanta area, and I have been the Imam for the last 13 years. And I graduated from Darul Uloom Deoband in 2002, and then I learned English from Markazul Maarif Education and Research Center in 2003 and 4, 3, 4, and 5. Let me tell you about myself. Since it is being taught that Darul Uloom Deoband does not allow English. So I am one of those students that when I was in Darul Uloom Deoband, I focused on my studies. There was the Arabic studies, the Islamic studies, and the Urdu studies. And I did not go, and I did not learn any extra things from outside Darul Uloom Deoband. And the idea was that whatever you are enrolled for, you focus on that so that you can excel in that. And then later on, whatever else you want to learn, you can learn later on. This is what I exactly did. My situation regarding English, my condition regarding English when I was in Darul Uloom Deoband, I did not even know from A to Z completely. And when I went to Markazul Maarif Education and Research Center, so what happened? The first thing the teachers asked, tell us, what do you know about English? So I was not able to say the full ABCD. Then, Alhamdulillah, we spent some time, 2 to 3 years in MMERC, and we were able to speak, to write, to understand, and to comprehend everything in English language. After a few years, I came to US. So a lot of people ask me here in US when they see me speaking English,
talking everything in English, giving bayan and lectures, even going to different colleges and universities and giving lectures over there. I have been, Atlanta is one of the metro cities and it has big universities. I have been to Georgia Tech for the lecture. I have been to KSU, Kansas State University for lecture. I have been to different courts also to clarify the Islamic position when sometime the courts and the judges, they invite some Islamic scholars to give the Islamic opinion regarding the Islamic matters. So I have been to the courts, and all of these things, they happen in the English language. And even not only those, who know us as that we are, English is our second, second language, but those people who are from here, the local American people, when they see Yes. us speaking English, they ask us that, where did you learn English? Did you learn here? And I say, I learned back home in India from Darul Uloom Deoband and from MMERC. So now I am the son of Darul Uloom Deoband. I graduated from Darul Uloom Deoband. I studied all of this thing in Darul Uloom Deoband. And I do not teach English as a language, but I teach everything in English. I teach the higher studies books also in English language. In our lectures, on Friday prayers, in other times, there are 1,000 or 1,500 to 2,000 people every time. So if Darul Uloom Deoband Darul Uloom Deoband had opposed English language to learn English language, then I would have not been able to do that. Why I did not learn English from here, I learned from Darul Uloom Deoband and MMERC. So even just as an example, my example is that in English speaking country, I can say that my English speaking and writing is not less than anybody else. I can speak English, fluently with anybody, with the professors, with the doctors, with any other person, and I'm capable enough of giving the lectures in front of different types of crowds. So that is Darul Uloom Deoband who has taught me this. That is Darul Uloom Deoband who has given me this education. And as per the making hue and cry on Darul Uloom Deoband's decision, that is their internal policy, that is their way of managing and maintaining their standard. If they make it, I will say this word, khichdi. If they make it like, melting pot for everything, that the students are learning everything, they will not excel in anything. What Darul Uloom Deoband does, that you are here to learn Islamic studies and Arabic studies. And once you are done with learning Islamic studies and Arabic studies, now if you wanna spread this knowledge, what you learn in English, we have another department that you can learn English in there. We have other centers also throughout India that you can learn English from there. Like for example, MMERC or HERF, or there are different other institutes that they are run by the students of Darul Uloom Deoband, by the graduates of Darul Uloom Deoband. And as Maulana Burhanuddin Saab Qasmi, Maulana Mudassir Saab Qasmi, and Maulana Professor Ajmal Saab, Maulana Hafizur Rahman Saab, they are in this panel. All of us are doing the work of Islam, and we are teaching the students in English language. So I think this is a very lame blame upon Darul Uloom Deoband. It is basically just they want to have this. The Indian media nowadays, they want to have just very cheap PR. Anything, any small thing they pick, they pick on Darul Uloom Deoband or on the Muslim community. They have a lot of better work to do, but I do not understand why do they not want to talk about those real issues. There are real issues. There is poverty issue, there is issue, there is education issue, there is corruption issue, there are a lot of political issues. Indian media, I do not understand how do they have time to how do they have time to to interfere into other people's, other institutes' personal and internal matters, while they ignore all the time the real issues, as I mentioned. And I mean, all of us know that
Indian बिल्कुल, media, अख्तर साहब। they are working on a specific agenda, and they want to follow their agenda. And if they do not find any real issues regarding the Muslim community, they just pick these, very small issues. While these are our internal issues, and it is the management matter, and why someone else from outside should pick on these things. So, and that is all of it बिल्कुल, I talked in अख्तर साहब। English language. Yes, sir. आगे हम इसको और जारी रखेंगे। बेहद शुक्रिया, आपने अच्छी बातचीत की, आपने अपना बैकग्राउंड भी बताया कि किस तरह आपने दारुल उलूम देवबंद से तालीम हासिल की है और अमेरिका जैसी जगह पर आप एक इंडियन होकर के और मदरसा बैकग्राउंड का होने के बावजूद आप अंग्रेजी में वहाँ सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। और यही एक सबूत है कि जो लोग दारुल उलूम देवबंद पर या मदरसों पर इल्जाम लगाते हैं कि वहाँ के बच्चे बहुत महदूद हैं, उनको दुनिया का कोई इल्म नहीं होता, वो साइंस नहीं जानते, वो जोग्राफिया नहीं जानते, वो लैंग्वेज नहीं जानते, उनको सिर्फ उर्दू आती है या थोड़ी सी अरबी आती है, तो सारा एग्जाम्पल दुनिया देख रही है कि इस वक्त मदरसा के पास आउट दुनिया के सभी शोबों में, सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं और उसकी हजारों नहीं लाखों मिसालें मौजूद है। हमारे साथ मौलाना मुदस्सिर अहमद कासमी साहब है। आप अल गजाली इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं, एमएमआरसी के सीनियर उस्ताद रहे हैं। मौलाना मुदस्सिर साहब, दारुल उलूम देवबंद को क्यों बार बार मीडिया के जरिए टारगेट बनाया जाता है, निशाना पर लिया जाता है? अब हालिया मामले को देखा जाए, एक इंटरनल इशू था, नोटिस था, उसको भी इतने बड़े पैमाने पर लाया गया, तो इन सब के पीछे कौन है? मकसद क्या है दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ इस तरह की खबरें चलाने का? मौलाना आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है अभी। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. In fact, the issue of Darul Deoband's notice about English learning is nothing but a storm in a teacup. Some of the negative-minded people and media houses are trying to make non-issue an issue. This is the real thing. In fact, they don't have deep knowledge about Darul's educational system and about Darul's syllabus. In spite of that, they are making unnecessary and negative remarks. Now, Darul Deoband's rector, Muhtamim Sahab, Hazrat Maulana Mufti Abul Qasim Nomani, and the head teacher of Darul Deoband, Hazrat Maulana Sayyid Arshad Madani, have made it clear crystal that they don't oppose English language, as already they teach English language and other modern subjects in primary section, and they have diploma in English language and literature course for graduates who completes Fazilat course from Darul Deoband. Only they restrict English language or other subjects for secondary education students, and it is because it affects badly their mainstream subjects. So now it's clear that Darul Deoband and its authorities never opposed English as a language. And we already know that Darul Deoband's products are doing remarkable work in colleges, universities, and many products of Darul Deoband are running English medium schools. I मोहम्मद असलम myself, साहब, एक सवाल आपसे yes, करना चाहूंगा इस बीच में कि yes, इनकलाब में आप अंग्रेजी में द मैसेज के नाम से कॉलम लिखते हैं, आप एक आलिम दीन है, मदरसा के फारिग, तो ऐसा क्या हुआ कि इनकलाब ने अंग्रेजी में लिखने के लिए आपसे संपर्क किया? अक्सर आप देखिए बड़े बड़े अंग्रेजी के राइटर स्कॉलर्स मौजूद हैं। yes. Alhamdulillah, I have been writing this column for last 14 years daily, and the editor of Inqilab, Mr. Shahid Latif, wanted
an Islamic scholar for this particular purpose, for to write message, because he wanted to give Quranic message and Islamic message to school students, college students, and university students. And he wanted that this work should be done by an alim. And he tried to find alim who knows English language. Alhamdulillah, he approached the Markazul Ma'arif Education and Research Center, and Director Sahab, Hazrat Maulana Muhammad Burhanuddin Qasmi Sahab, appointed me for this work. And Alhamdulillah, I am doing this work for last 14 years. And this column, school, you can see in Maharashtra and many other states, and even in abroad, school authorities stick this message on their notice board for the benefit of their students, not only in India, but all over the world. And I want to continue my previous talk that I myself run English medium school and a product of Darul Uloom Deoband, an advisory member of Darul Uloom Deoband, Hazrat Maulana Badruddin Ajmal Al Qasmi runs more than 100 English medium schools in Northeast, and he runs about 40 colleges and many other activities, and he is the product of Darul Uloom Deoband. And this is the proof that Darul Uloom Deoband and the authorities of Darul Uloom Deoband never stop their products and their students to learn English language and to teach English language. Alhamdulillah, I have written an English book, Prophet Muhammad's life and introspection on present day condition. And this book was uncovered by Vice President of India, Janab Hamid Sahab. Hamid Ansari Sahab. So it is merely a propaganda. And yes, this book. So it is merely a propaganda against Darul Uloom Deoband and nothing else. बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुदस्सिर साहब ने तफसील से बताया। हमारे साथ और भी पैनलिस्ट मौजूद हैं और दोबारा भी आप लोगों के पास आना है। जो लोग हमें देख रहे हैं लाइव फेसबुक या यूट्यूब पर, आप लोग अपना कमेंट सजेशन लिख सकते हैं जरूर। हम आपके बेहतर कमेंट को, मोहम्मद मुदस्सिर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा आप म्यूट कर लीजिएगा, आपकी थोड़ी सी लीड में प्रॉब्लम है। तो जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं यूट्यूब फेसबुक पर, आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं और आपके बेहतर कमेंट को हमारी टीम डिस्प्ले करेगी। स्क्रीन पर आपका कमेंट भी आ सकता है और इस तरह आप भी हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग हमें जहां कहीं भी देख रहे हैं तो आप जरूर अपनी शिरकत कीजिए बेहतर से बेहतर कमेंट करके। और हमारे पास मौजूद है डॉक्टर हिफ्जुर्रहमान कासमी साहब, हाल ही में इनको जेएनयू से पीएचडी की डिग्री मिली है और आप भी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं डॉक्टर हिफ्जुर्रहमान कासमी साहब, लेकिन उर्दू में भी जरा बोलिएगा। हिफ्जुर्रहमान साहब, दारुल उलूम देवबंद का जो नोटिस आया ना, बच्चों का एक एहसास है कि बच्चे अगर अंग्रेजी सीखते हैं तो उनको नहीं सीखना चाहिए तालीम के दौरान। आपको क्या लगता है, क्या दारुल उलूम के जो बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं तो उसकी वजह से उनका नुकसान होता है, उनकी तालीम पर असर पड़ता है? क्योंकि कई मरतबा होता है कि इधर कुछ बच्चे अपने आप को एक्स्ट्रा होशियार समझते हैं कि एक साथ दारुल उलूम की भी तालीम हो जाएगी, अंग्रेजी का भी डिप्लोमा कर लेंगे, दोनों काम हो जाएगा, उसके बाद फौरन हम कहीं जॉब करने लगेंगे, कुछ और करने लगेंगे, कम वक्त में ज्यादा, और आज के दौर को माना जाता है। तो आपका तजर्बा है, आपने मदरसा से तालीम हासिल की है फरागत, उसके बाद फिर आपने मरकज से तालीम हासिल की है, उसके बाद फिर आपने पीएचडी किया है, यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। तो क्या एक वक्त में कई सारा कोर्स करना चाहिए या अलग अलग करना चाहिए, वो बेहतर होता है? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullah khair. Thank you very much, Shams Tabriz Qasmi Sahab, for inviting me in this panel discussion. So,
You asked me about whether a person can earn or receive two types of educations at the same time or not. Can you imagine? Do you have a residential coaching academy in Jamia Millia Islamia, which provides preparations facilities for UPSC and other job streamed or focused areas? So, if a person is associated with that academy, can you imagine that that person can receive any other type of education at the same time? Or you know that the result of NEET exam was released 2 days ago, and a person or a student who is preparing for the NEET examination, and you also know that the Muslim community is very keen to impart religious education to their sons and daughters and their children. So if a student is doing preparations for NEET exams, can that student, whether he is a male or female student, learn Quran or Hadith or anything else at the same time? That is not possible. You know that the NEET examination or UPSC examination requires a huge skilled effort and main focus on the subjects which are required or which are examined in those examinations. So if a person diverts his attention or her attention to other studies or other subjects, he or she cannot do best in their exams. So uh, therefore, or in the same way, Darulum Deoband has issued this notice that that studying Quran or Hadith is not a child's play. ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा उठे और सीधे जो है वो कुरान और हदीस की गहराइयों में उतर करके उसके मानी और मतालिब को निकाल करके समझने लगे, बल्कि उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, फोकस चाहिए. यू नीड टू डिवोट योरसेल्फ to the Quran and Hadith and the studies or sciences which have been discussed in the Quran and Hadith. Therefore, you need to devote yourself and focus on the studies that you are doing in Darulum or any other institution. Yes, if you have free time, you can do other courses as well, but there are some courses which don't allow you to divert your attention to other things, and the courses which are given or provided by Darulum Deoband are of the same nature. I can give you some examples. For example, uh, I am I have been a student of Darulum Deoband, and then I was associated with Markaz al Marif Education and Research Center, and then I moved to Jamia Millia Islamia, and thereafter I joined Jawaharlal Nehru University. Until then, I finished my PhD. I have been a gold medalist in Jamia Millia Islamia as well, and so far I have translated more than 1 lakh pages from Urdu into English and vice versa. So can you imagine, if a person is not focused on the subject which he is studying, do such a great thing? No, it is not possible for him that he can do everything at the same time. So that is the reason why Darul Uloom Deoband wants to make its students master of one subject rather than making them jackal of all. And that is what the world wants now. The world does not want you to do everything. Rather, there is a specialist in every field. Yes, you must know the basic of everything, but you must be a specialist in one thing. And you, for example, I can give your example as well. You have been the student of Darulum Deoband. As I know, you didn't join any other institution. You didn't know or didn't do any other course. Whatever you learned from Darulum Deoband, and yet you are running such a great media house, reported media house, mashallah, and you are member of Press Club in India. Where did you learn all these things? थैंक यू. बिल्कुल. डॉक्टर रहमान कासमी साहब, बेहद शुक्रिया. मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब, सारे गुफ्तगू बातचीत चल रही है, बट बार बार ये देखा जाता है कि दारुल उलूम को
ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इश्यू बनाया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दारुल देवबंद का ये इंटरनल मैटर था, एक ऐलान था, और तमाम इंस्टीट्यूशन में इस तरह के ऐलान निकलते रहते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ऐलान निकलते रहते हैं। लेकिन दारुल का कोई भी ऐलान निकलता है, वो पहले व्हाट्सएप पर आता है, फिर फेसबुक पर जाता है, फिर ट्विटर पर जाता है, फिर वो खबरों की ज़ीनत बन जाता है, कई मर्तबा देखा गया है। तो आखिर जो दारुल देवबंद का ऐलान है, नोटिस बोर्ड पर चस्पा होता है, वो व्हाट्सएप पर आता कैसे है? कौन लोग इसको आगे बढ़ाते हैं? और दारुल की बातें इतने बड़े पैमाने पर किस तरह लीक हो रही हैं? ज़िम्मेदार कौन है इसके लिए? आपके इस सवाल के जवाब में मैं 2-3 जुमला बोलूँगा। जी। एक साहब के माइक से आवाज़ आ रही है, मेरे ख्याल में उसको अगर ऑफ कर दे, म्यूट कर दे। देखिए, व्हाट्सएप में आता कैसे? ये तो हम और आप सब लोग जानते हैं कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली हुई है, और जी। गूगल जो है ना इमाम कहा जाता है, इमाम गूगल। तो मैं एक बात कहूँगा हमारे नौजवानों को, ख़ास तौर पर स्टूडेंट को, किसी भी स्ट्रीम में अगर है, कि हमेशा सब चीज़ें जो है ना शेयर करने की नहीं होती है, और इसको जो है ना बहुत ज़्यादा वाइडली शेयर करने की वजह से जाकर के गलत लोगों ने जो है ना उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात भी करें कि बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर की बातों का हमेशा जो है ना बाहर जा कर के आप शोर शराबा नहीं करते हो, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि दारुल में भी जो है ना ऐलान में मिसाल तो हम सब कह रहे हैं कि हम दारुल के जो है ना दारुल के प्रोडक्ट है, दारुल के बच्चे हैं, फ़ख्र करते हैं उसके ऊपर। फिर भी उस ऐलान में भी जो है ना एक लफ्ज़ को अगर वो लोग नहीं लिखते तो आज ये मसला ही नहीं बनता। तो उस लफ्ज़ को अगर हटा भी देते तो उस ऐलान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हो जाता। ये दोनों बातें कहने के बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, यानी जी। हम लोग अगर इफ़ आई गो ऑन टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक दारुल vis-a-vis इंग्लिश, तो आई कैन गो ऑन आवर्स आफ्टर आवर्स। दारुल के बारे में कह रहे हैं कि लोगों ने फतवा दे दिया कि दारुल ने, अभी वही कुछ मीडिया हाउस में देखा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ करके, कि दारुल ने फतवा दे दिया है इंग्लिश के खिलाफ, दारुल ने बैन कर दिया इंग्लिश को। These are, I should term, these are Islamophobic, these are sick-minded people. They just didn't paid enough attention to that context or text, and they are just trying to earn unnecessarily TRP and unnecessarily peership and unnecessary favor from their masters. They should stop it. This is going to spoil the Indian nations as a community. India's unity in diversity is going to be harmed, and India is going to be defamed internationally. And these all acts are against education itself. ये तालीम के खिलाफ है। दारुल के पास डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। अभी कुछ दिन पहले उसी डिपार्टमेंट के एक लेक्चरर ने इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखा जाए, मौलाना इंग्लिश ग्रामर जो ना 300 पेजेस की किताब जो है ना लिखी है, वो इंग्लिश ग्रामर पे किताब लिखी है दारुल के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लेक्चरर ने। अब अंदाजा लगाया यार, वो दारुल जो है ना फतवा देने जा रहा है, ये किताब जो सामने है फतवा देने जा रहा है इंग्लिश के खिलाफ। इसी तरह से दारुल वक्त देवबंद के दो असातिज़ा ने, एक ने तो एक 1000 पेजेस की किताब लिख डाली है अंग्रेजी के ऊपर, इंग्लिश टेक्स्ट के ऊपर, दूसरे ने अगेन जो है ना 400 पेजेस की किताब लिख डाली है। ये किताबें भी आपने यहाँ दिखाए हैं, ये मिसाली इंग्लिश। तो इस तरह की किताबें जो है ना वहाँ के प्रोडक्ट, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के टीचर्स, लेक्चरर्स लिख रहे हैं। दारुल के वेबसाइट खुद जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश में जो है ना वो फतवा डिलीवर कर रहे हैं। दारुल के वॉल मैगजीन जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेजेस में है। दारुल के जो है ना ऑफिशियल एक्टिविटीज में बहुत सारे काम जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। 2001 से लेकर के वहाँ इंटरनेट डिपार्टमेंट है, जब उस वक्त से जब बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बाकायदा इंग्लिश मतलब कंप्यूटर डिपार्टमेंट कायम नहीं हुए थे, तब से वहाँ इंटरनेट और कंप्यूटर के डिपार्टमेंट है। 2001 से आप अंदाजा लगाइए, 22 साल हो चुका है। तो दारुल के खुद किताबें जो हिस्ट्री है, दारुल की जो तारीख है, वो तमाम चीजें जो है ना अंग्रेजी में लिखी है। दारुल के वेबसाइट इटसेल्फ इज इन इंग्लिश एज वेल। सो लोग जी, कैसे कह बिल्कुल। सकते हैं यार, किस अंदाज से कह रहे हैं कि दारुल जो है ना अंग्रेजी के खिलाफ है। हम लोगों को मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है इन मीडिया वालों ने
अपने वास्टेड इंटरेस्ट की वजह से मुमकिन है इस इशू को पिक किया है। और यहाँ जो आपके पैनलिस्ट है, और मुझे यकीन है अगर आप सर्च करने जाते हैं तो इस तरह के तो हज़ारों पैनलिस्ट मिल जाएंगे आपको जो दारुल उलूम के फुज़ला है, और आपके चैनल में आकर के बात कर सकते हैं कि हम लोगों ने अंग्रेजी में क्या क्या किया है। तो कम से कम दुनिया बिल्कुल वालों को, आवाम को जो है ना ये बात तो मालूम हो जाएगी आज के बाद इस आपके मतलब इस पैनल डिस्कशन से कि दारुल के अंग्रेजी जबान में खिदमात कहाँ तक पहुंचा हुआ है और दारुल ने किस हद तक खिदमात जो है ना उसके अपने बच्चों के जरिए से किया है। मैं खुद जो है ना अंग्रेजी मैगजीन का एडिटर हूँ। वाह, these people are saying we are against English. I am an editor of an English magazine. I am an OPD writer. I have been writing for the Hindu, the Hindustan Times, the Times of India, Telegraph, and all these newspapers, daily newspapers. I have been writing OPD pages, composed poetries, which are published from Oxford and Cambridge University, and these people are saying we are against English language. Wow. Yeah. So it is Islamophobic, it is sick, and they should stop all this nonsense and work for the betterment of community, for India, for students, and unite. Try to unite people rather than divide them. That would help India as a nation in future. जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद को भी थोड़ा सा नोटिस निकालने में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल रशीद कासमी साहब, अभी जो खबर है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ने या कह लीजिए कि तहफ़्फ़ुज़ हुकूक अतफ़ाल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सहारनपुर के डीएम से कहा है कि आप इस मामले की जांच कीजिए, एक्शन लीजिए कि क्यों बच्चों को तालीम हासिल करने से रोका जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इसकी वजह से दारुल उलूम देवबंद को नई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा या कोई बड़ा इशू नहीं बनेगा ये? जी, हमें तो लगता है कि ये नेगेटिविटी जो होती है इसमें कभी-कभी पॉजिटिव अवसर होते हैं, और जब वो आएँगे तो खुद इंशाअल्लाह वो खुश होकर के जाएँगे। अल्लाह तबारक व तआला को बात चीज़ें पहुँचाना होती हैं और किसी न किसी ज़रिए से पहुँच जाती हैं। जब वो आएँगे तो खुद उनको समझ में आ जाएगा। ये बात बार-बार कही गई कि ख़ास पर्टिकुलर वक्त में दारुल उलूम ने मना किया है कि भाई इस कोर्स में इसी में मेहनत करो, क्योंकि अगर तुम उसमें दूसरा कोर्स करने लगोगे तो तुम्हारे अंदर स्पेशलिटीज़ और जो सलाहियत पैदा होती है वो नहीं हो पाएगी। जैसे कि मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में कहा कि वहाँ हिंदी पर ममानियत है, और हमारे यहाँ बोलने में मिसाल के तौर पर हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं यहाँ, तो हमारे यहाँ कि आप उर्दू पर बात मत करें, उर्दू मत बोलें बल्कि हिंदी और इंग्लिश बोले। तो जब ये अथॉरिटी आएगी इंशाअल्लाह, और हमारे जो दारुल उलूम के असातिज़ा हैं, जो वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, जब इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि उनको हंसी भी आए कि किस छोटी चीज़ों को बतंगड़ बना दिया गया। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो खुश होकर के जाएंगे, मुतमईन होकर के जाएंगे। दारुल उलूम में किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। बिल्कुल, हमें लगातार एक साहब कमेंट कर रहे हैं, इनका नाम तो नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश विद फरीद। इन्होंने कई अच्छा कमेंट्स का एक में इन्होंने लिखा था कि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ और बच्चे कई साल तक पढ़ने के बावजूद अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते। अभी इनका मैं कमेंट आप डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि माइंड भी डिस्टर्ब होता है स्टूडेंट का कई सारी चीज़ों को हासिल करने से। तो यकीनन इन लोगों का तजर्बा है और बता रहा है। मौलाना अजमल कासमी साहब हमारे यहाँ तजर्बाकार बैठे हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। दारुल उलूम देवबंद के निसाब में क्या आपको लगता है कुछ तब्दीली आनी चाहिए? क्योंकि अंग्रेजी, कंप्यूटर बच्चे चाहते हैं कि एक साथ करें। हालांकि मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब ने शुरू में वजाहत की थी और है भी कि दारुल उलूम देवबंद के निसाब में पहली क्लास से गालिबन अरबी चहारुम तक अंग्रेजी का घंटा है, उसके बाद फिर नहीं है। 6 साल शुरू में, 6 साल शुरू के 6 साल में, वो मेरे ख्याल में दिन यहाँ से शुरू होता होगा। हम लोगों ने भी जहाँ इब्तदाई तालीम हासिल की थी, अशरफ उलूम कन्वा बिहार का एक मदरसा है, तो वहाँ भी अरबी सोम तक घंटा था। हालांकि उस जमाने में ऐसा था कि अंग्रेजी का घंटा कोई करने ही नहीं जाता था, उसको टाइम पास घंटा समझा जाता था। जो मदरसे के इंग्लिश के उस्ताद होते थे, मास्टर साहब, वो खाली बैठे रहते थे, बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते थे। अब अच्छी बात है कि बच्चों में बेदारी आई है इसको सीखने के लिए। तो आपको क्या लगता है अजमल साहब, किस तरह होना चाहिए इसको लेकर के? Bismillahirrahmanirrahim. In my opinion, since Darul Uloom Deoband is teaching English and other subjects like geography, mathematics, and history from class 1 to 6, there is no need to change the syllabus afterwards, because Darul Uloom Deoband wants in these subjects for the students to excel in their field. Hadith, fiqh,
and exegesis, the Quran, the interpretation of Quran, and other subject like philosophy and the literature. So, in my point of view, in my opinion, there is no need to change the syllabus in this, in this period, from the class Suam till Daura, and after that, those who wish to excel themselves in Arabic, in English language, so they can take admission in the 2 year special course to excel in English language. My story I would like to share with you. Yeah. When I came to Jain, when I came to, to Darul Uloom Deoband in 1991, I didn't know anything, but I tried to learn from that very time English. And while getting the degree of Fadila from Darul Uloom Deoband, I learned how to write the address over the Antardeshi and the postcard, and went to Aligarh Muslim University and started English. And but the notion and the fervor I got from Darul Uloom Deoband itself, and that is, just Markazul Ma'arif, that was established in Deoband in 1993. And right now, I am teaching in JNU, and I teach the English, medium students. I teach Arabic, and I have written a book for the Arabic learning students. This book is Learn Modern Arabic. It is in English, for the English, medium students, how to learn Arabic through, Arabic, English. sorry, English medium. Yes. So this is Yeah, the book, absolutely, and Dr. this Saab. book is the third edition now. And every year, the students of JNU and other universities and the colleges, purchase the book. And some of the colleges in South India has adopted this book in their syllabus, and especially and similarly, the Zakir Hussain Delhi College has put this book as a reference book. And similarly, being a student or graduate of Darul Uloom Deoband, I used to write articles also. This is my article that I have written over India and art and culture brought India and Kuwait together. This is my article. So this is the virtue of Darul Uloom Deoband that I have got. So Darul Uloom Deoband doesn't restrict anyone to learn Arabic, English, and there is no need to change the syllabus. The change is the syllabus is itself the good place, and we should concentrate on the subject that is being taught from the beginning, and afterwards that the 2 years of English course after getting the degree of Fadila. So in my opinion, the Darul Uloom Deoband syllabus of Darul Uloom Deoband is intact. It's a fine. जी बिल्कुल, Capable मतलब people आपका are कहना है कि sitting in the दारुल realm उलूम of को सिलेबस में जी capable people are मोहम्मद Excuse sitting in me. the realm of yeah. Capable people are sitting in the realm of administration in the Alum Deoband. They know what to change and when to change. They are changing. The Alum is not unchangeable. They are changing in their curriculum. They are changing in the teaching methodology. They are changing as per their requirement of their student and their community. So no need to suggest anything from Exactly. outside. No need to suggest anything from outside. They are doing Alhamdulillah, and they are capable people. They know the world, Exactly. and they are well equipped with the situation of the world. So we are confident, we are happy, they are doing good job, Alhamdulillah. या And as far बिल्कुल as the notice is concerned, notice is in its place. It's fine. And notice there is nothing to do whatever the media is doing with the notice. Notice was good at its place, and for the students that they should follow the instruction by Darul Uloom Deoband. The share of the notice, it was wrong. So the people, those who are studying in Arabic, they are very very much mature in their age and their understanding. So they should think that the repercussion of the sharing of this notice, what will what can take place, what can happen. So they should think, the mature people, the mature students of Darul Uloom Deoband, they are not immature. So how they share these things on the social media, so they should think over this also.
या बिल्कुल। अच्छा, मुफ्ती बैदुल्ला कासमी साहब ने कमेंट किया कि आई डोंट थिंक देयर इज एनी मिस्टेक ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम के दारुल उलूम देवबंद के नोटिस में किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं थी। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि नोटिस को कॉमन होना चाहिए था, इंग्लिश वगैरह का लफ्ज अंडर ब्रैकेट नहीं आना चाहिए था वर्डिंग में। मोहम्मद असर साहब, क्या कहना है आपका इस बारे में? आपकी आवाज अनम्यूट कीजिए मौलाना। माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए मदरसी साहब, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। Yes, 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 म्यूट कर। yes. To me, notice is okay. It's good. It's okay. ओके। The main thing is that it should not come outside of the of campus, as it was done by immature people. बिल्कुल, नोटिस बाहर नहीं जानी चाहिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। एक अच्छा, बार बार होता है, कई मरतबा छोटी सी नोटिस होती है जिसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं, उसकी नोटिस को भी उमूमन देखा जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, वहां शेयर करना। हो सकता है कि लोग मोहब्बत में शेयर करते हो कि बाहर भी जो दारुल उलूम के अपनाए कदीम है, अलुमनाइज है, उन तक मैसेज पहुंचे, और उस चक्कर में बहुत चीजें आगे बढ़ जाती है। मौलाना अफसर अली कासमी जी साहब, जी, एक आखिरी सवाल आपसे तबरेज करेंगे। साहब, जी मौलाना शम्स तबरेज साहब, बात वही जी है जो आप कह रहे हैं। उनका मकसद कुछ और नहीं होता, मकसद ये होता है कि सारे लोगों को मालूम हो जाए कि जी जी दारुल फ़िक़्ह और जो जो उसका असल मेन स्ट्रीम है, उसमें वो मज़ीद और तलबा में महारत पैदा हो। ये सिर्फ मकसद है, कोई उसमें गलतफहमी या कोई बदगुमानी मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि सारे लोगों को मालूम हो जाए, और वो नोटिस अपने में पूरी कंप्लीट नोटिस है वो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मौलाना अफसर अली कासमी साहब से करेंगे, उसके बाद इस सेशन को हम खत्म करेंगे। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान कासमी साहब भी काफी देर से हाथ उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा और सब्र कीजिएगा। मौलाना अफसर अली कासमी साहब, आपने जैसे आप अमेरिका में हैं, वहाँ तालीम इदारों से आप जुड़े हैं, तो वहाँ का जो दीनी इदारा है, वहाँ क्या निज़ाम है तालीम का, निसाब तालीम किस तरह का है वहाँ? So basically, there are different types of educational institutes. So I am in a religious institute. So we specifically focus on Islamic studies. We teach the students starting from A, B, C, D, Alif, Ba, Ta, Sa, and then we teach up to the higher education of Islamic studies. We teach Arabic. We do not focus on English over here at all because it is Islamic Studies Institute, and no one comes from outside. We have Christian friends and neighbors, and they come and they never say, you live in America and you never teach English, because English is the language over here the students learn in the schools. When they come to the masjid, when they come to our school, they do not come to learn the language. They come to learn the Islamic studies. In the same way, in our in our Atlanta area, there are few big universities, and they have different specialty. For example, one of the universities is Georgia Tech University. Georgia Tech University is known for its computer science courses. So if someone over Georgia Tech, why is not teaching English? So that is not right, because Georgia Tech is not specialized in. Georgia Tech focuses on the computer science. In the same way, there are some there are some technology institutes, for example. So they teach different technologies, or there are different other schools. So whatever the school has been established for, the school or the institute or the university is going to focus on that thing. As for let me tell you another thing here, especially the immigrant communities, in their households, even in my own household, yeah, sometimes I do not allow my own kids to speak English, and I tell them you have to speak in Urdu. There are some households that they do not give permission their kids to speak English in the household, so that they can learn the language of their parents. So they speak in Urdu, or they speak in Bangla, or they speak in Arabic, or they speak in Gujarati, different, wherever the people come from and whatever their mother tongue is. So they want their kids to learn their mother tongue. So basically, it is the matter of priority. What your institute, what your college
or school has been established for, whatever it has been established for, that is the work which has to be done. And this is what exactly Darul Ulum Deoband is doing. Darul Ulum Deoband was not established to make doctors. Darul Ulum Deoband was not established to teach English language. Darul Ulum Deoband was established to teach Islamic studies and the Quran and the Hadith. These are the subjects that they require full time and they require a lot of efforts. So whatever Darul Ulum Deoband has done, I think, in my opinion, I'll say that Darul Ulum has taken this step, and this is not the first time that Darul Ulum Deoband has done that. I have जी seen this बिल्कुल, type of दारुल उलूम देवबंद announcement का even in my क़याम भी time. हुआ है दीन की तालीम देने के लिए, हदीस, कुरान और हम्म, फ़िक़्ह पढ़ाने के लिए, किसी हम्म। और मकसद के लिए नहीं। हिफ्ज़ रहमान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी से 4-5 साल पहले, लॉकडाउन लगने से पहले जो है हम एक स्टोरी कर रहे थे ईस्टर्न क्रिसेंट के लिए। तो जी। उसमें ये था कि दारुल उलूम देवबंद से फारिग होने के बाद हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हैं। तो उसमें हमने एक आर्टिकल लिखा था, मौलाना बिकमिंग डॉक्टर्स, और उसमें एक लंबी फहरिस्त थी जिन लोगों का हमने जिक्र किया था। हमारा अगला आने वाला था कि मौलाना जो है जो लॉ के फील्ड में जा रहे हैं या मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं, कितनी लिस्ट थी? मौलाना बिकमिंग कितने लोगों की लिस्ट आपने तैयार की जो डॉक्टर हैं? उस वक्त में हमने जो तैयार किया था पीएचडी डॉक्टर्स जो है तकरीबन 30 थे उस वक्त जो हम हमारे रिसर्च में आए थे, जिनके बारे में हमने मालूमात हासिल की थी, और वो ईस्टर्न क्रिसेंट में जो है स्टोरी छपी भी थी। और उसके बाद मौलाना बिकमिंग लॉयर्स हमारा अगला स्टेप था, लेकिन उसके बाद जो है फिर ये हो गया, लॉकडाउन वगैरह का मामला हो गया जिसकी वजह से रुक गया। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर दारुल उलूम देवबंद का जो निज़ाम तालीम है या सिलेबस है, अगर आपके पोटेंशियल को, जैसा कि लोग क्लेम कर रहे हैं, फॉल्स क्लेम कि किल करता है, आगे नहीं बढ़ने देता है, तो वहां से निकलने के बाद हाउ पीपल आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटीज एंड अचीविंग सच अ बिग गोल्स। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि दारुल उलूम देवबंद या जितने भी मदारिस है अपने पूरे इंडिया में, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस जमाने में ऐसा लगता था कि बस दुनिया इसी का नाम है, तालीम इसी को कहते हैं, आओ फ्री में एडमिशन लो, फ्री में आपको लॉजिंग, फूडिंग और ट्यूशन, इवन के बुक्स और सारी चीजें आपको मिल रही है, और पढ़ लीजिए, पढ़ करके चले जाइए। बट नाउ when we are giving education to our children and we have to pay for everything, तब हमें समझ में आता है कि दुनिया वैसी नहीं है भाई जैसा हम लोगों को देवबंद में लगता था कि फ्री में सारी चीजें मिल रही है। तो अब ये आप मदरसे जितने भी हैं या दारुल उलूम देवबंद है, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन एंड टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स द कंट्री है कि फ्री में ये लोग अवाम के पैसे से अवाम के बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऐसी तालीम दे रहे हैं। तो हमें इनको जो दारुल उलूम का एफर्ट्स है और उसका कंट्रीब्यूशन है मदरसों का, इनकी सराहना करनी चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये लोगों को ला रहे हैं और ला करके पढ़ा रहे हैं। अब ये है कि जो उनका सब्जेक्ट है वही पढ़ाएंगे, दूसरी चीजें क्यों पढ़ाएंगे भाई? अगर आपको लगता है कि दारुल उलूम के बच्चों को या बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, तो आप भी जाकर के कहीं पे जो है फ्री में इंस्टीट्यूशन खोल दीजिए, बच्चे आएंगे, आकर के पढ़ेंगे, 6 महीना साल भर का कोर्स करके जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। तो ऐसा तो करते नहीं है, करना नहीं है, सिर्फ तनकीद करना है। सिर्फ तनकीद करने से कुछ नहीं होता है ना, तो एप्रिसिएशन करने वाला मिजाज हमें डेवलप करना चाहिए। तो ये बातें मैं उस वक्त करना चाह रहा था। इंशाल्लाह मैं इस स्टोरी को और भी आगे डेवलप करने की कोशिश करूंगा कि देवबंद या दीगर मदारिस से पढ़ने के बाद बच्चे जो है किस किस फील्ड में क्या क्या कारनामे अंजाम दे रहे हैं। अब तो इस 5 सालों में और भी एक लंबी फहरिस्त आगे बढ़ गई होगी, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ, उसके बाद का डॉक्टर हूँ। ये है। बहुत मुबारक हो। कुछ लोगों ने कई सारे कमेंट्स किए साहब का। अभी तकरीबन 50 डॉक्टर्स जो है ना हो चुके हैं, और मैं सिर्फ एक और जुमला ऐड करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के आवाम को और हिंदुस्तान की हुकूमत को मदारिस की इस बात को खुलकर अप्रिशिएट करना चाहिए कि मदारिस विदाउट टेकिंग एनी पेनी फ्रॉम एनीबडी, they are contributing to the literacy of India. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या SSA सर्व शिक्षा अभियान में मदारिस का जो कंट्रीब्यूशन है वो अनडिनाएबल है। कम से कम लोगों को लेटर्ड तो बना रहे, बहुत सारे लोगों को जो है ना पढ़ा लिखा बना रहे। इस कंट्रीब्यूशन को मदारिस के हुकूमत को भी और आवाम को भी बगैर लगी लिपटी के जो है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक ने सवाल कर रखा है, हालांकि हमारे टॉपिक सेट कर रहे हैं, लेकिन का सवाल है गैस शेख है कोई कि जो नौजवान मदरसा से दूर हैं उनकी दीनी तरबियत के लिए हमारे उलमा का क्या इंतजाम है? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनका कमेंट।
یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب بتائیں گے اس کے بارے میں کہ کیا کچھ پلاننگ ہے ان کے پاس اس سلسلے میں یا نہیں. جی بس آپ کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہم اناؤنس کرنا چاہتے ہیں کہ مرکز المعارف نے انگلش میڈیم مدرسے کا کانسیپٹ کو میٹیریلائز کر لیا ہے، اور ابھی انشاءاللہ آئندہ سال باقاعدہ پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو مدرسے میں نہیں جاتے ہیں، مکتب میں نہیں جاتے ہیں، وہ انگلش میڈیم میں مدرسے کے تعلیم بھی حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھیے ایک صاحب کا کمنٹ ہے، شمس بھائی، امریکی انسٹیٹیوٹ میں انگلش کے لیے چند طلبہ آتے ہیں اور یہ ادارے طلبہ کو بیوقوف بناتے ہیں. میں امریکی انسٹیٹیوٹ میں بھی انگریزی پڑھاتا تھا. ہوتا ہے، وہ بہت سارے کھلے ہوئے امریکن انگلش سینٹر، برٹش انگلش سینٹر، 2 مہینہ میں اسپوکن کرا دیں گے، بچے جاہل بن کر نکلتے ہیں. تو خیر تجربہ ہے، ہم اپنے experience کی باتیں کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ سب نے ہمیں جوائن کیا. جو ریئلٹی ہے، سچائی یہی ہے کہ مدرسہ کے طلبہ اس وقت دارالعلوم دیوبند سے نکل کر کے یا دیگر مدرسوں سے نکل کر کے ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں جا رہے مائک ہیں. اور دوسرے وہ لوگ اپنا مائک بند کر دیں. اور اس وقت مدرسوں میں نصاب میں بھی تبدیلی کچھ آئی ہے. دارالعلوم دیوبند میں انگریزی کا شعبہ موجود ہے، کئی سارے مدرسوں میں ہے. مرکز المعارف کے تحت بہت سارے سینٹر چل رہے ہیں، بہت سارے سینٹر کی نگرانی کئی اداروں کے ذمہ دار خود ہمارے اسکرین پر موجود ہے. اسکول مدرسے کے فضلاء 10 شہروں میں اسکول قائم کر چکے ہیں اور ان کا اسکول CBSE سے منظور ہو چکا ہے اور معیاری تعلیم دی جا رہی ہے. انگلش میڈیم کی اسکول کے ڈائریکٹر ہیں مدارس کے فضلاء محمد اسر قاسمی ہیں، بھی موجود ہے. اور اس طرح ایک بڑی تعداد ہے ایسے ذمہ داروں کی. اس کے علاوہ جو بہت سارے مدرسے ہیں وہاں اب نیشنل اوپننگ اسکول کا سسٹم لیا گیا ہے. وہاں کا جو نصاب ہے ان کو پڑھایا جا رہا ہے. بہت سارے مدرسے نے اپنے مدرسے کو اسکول سے الحاق کر لیا ہے کہ جہاں صبح کی شفٹ میں مدرسے کی تعلیم ہوتی ہے، شام کی شفٹ میں اسکول کی تعلیم ہوتی ہے. جب بچے چوتھی پانچویں یعنی چہارم پنجم تک پہنچتے ہیں تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ میٹرک کے برابر پہنچ جاتے ہیں، میٹرک کا ایگزام دیتے ہیں. اور کئی بڑے اداروں نے ایسا کیا ہے، دارالعلوم وقف کا بھی نام آ رہا ہے جنہوں نے اپنے نصاب کو بہتر بنایا ہے. کئی ادارے بنا رہے ہیں، القوا کی مثال ہمارے سامنے. اور چھوٹے چھوٹے مدرسے بھی کئی سارا سینٹر لے کر کے اپنے نصاب کو بہتر بنا رہے ہیں. اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو ڈاکٹرز اور PhD کرنے والوں کی تو ایک بڑی تعداد ہے. اب مدرسے کے بچے نیٹ بھی کر رہے ہیں. اسی سال 10 ایسے بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں اور انہوں نے نیٹ صرف کوالیفائی نہیں کیا بلکہ 600+ نمبر حاصل کیا. 6 کالجز میں ان کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے. مدرسے کے کئی بچے ہیں دارالعلوم کے فارغ ہیں، وہ LLB کر رہے ہیں. کل ہی میرے پاس ایک بچے کا میسج آیا، اس کا ایک لاء کے ایک معیاری انسٹیٹیوٹ میں داخلہ ہو گیا ہے. جرنلزم میں تو بڑی تعداد ہے، بلکہ اس وقت اردو کے جتنے بڑے بڑے اخبارات چل رہے ہیں ان کے ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر مدرسے کے فضلاء ہی ہیں، خواہ وہ مظاہر کے فضلاء ہو یا ندوہ کے فضلاء ہو یا دارالعلوم کے فضلاء ہو. اور ڈیجیٹل میڈیا میں مدرسے کے فضلاء آ رہے ہیں، انگریزی نیوز چینلوں میں آ رہے ہیں. کئی سارے TV چینل ہیں مین اسٹریم کے، وہاں کے جو نیوز اینکر ہیں، پروڈیوسر ہیں، وہ ندوہ کے فارغ ہیں یا دیوبند کے فارغ ہیں. تو ایک بڑی تعداد ہے جو ان شعبوں میں کام کر رہی ہے. ان کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آ پاتی. میڈیا ہمیشہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتی ہے، نگیٹو پروپیگنڈا کرتی ہے. اس کے علاوہ باہر ملکوں کی بات کریں تو امریکہ سے افسر صاحب موجود ہیں. یونائٹڈ کنگڈم میں کئی سارے دارالعلوم کے فضلاء وہاں کے اسکول میں، کالجز میں پڑھا رہے ہیں اور انگریزی زبان میں ان کو تعلیم دے رہے ہیں. افریقہ میں موجود ہے، زامبیا میں موجود ہے، کینیڈا میں موجود ہے. دنیا کے جس خطے میں جائیں گے آپ کو مدرسے کے فضلاء نظر آتے ہیں اور وہ وہاں کی زبانوں کو سیکھ رہے ہیں، دوسری زبانوں کو سیکھ رہے ہیں. اس وقت میڈیکل ٹورزم بہت بڑا ہب بنا ہوا ہے، وہاں مدرسے کے فضلاء بھرے ہوئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ مدرسے کے فضلاء کو اب کسی بھی میدان میں نظر انداز کیا جا سکتا ہے. ہر جگہ موجود ہے، کامیابی کے ساتھ دیش کی، قوم کی، ملت کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میڈیا نے ہمیشہ نگیٹو پروپیگنڈا کی ہے اور وہ کرتے رہیں گے، لیکن جو لوگ اس حوالے سے ذمہ دار اس کا جواب بھی دیتے ہیں اور صحیح جواب دے رہے ہیں. تو اسی موضوع پر ہماری بات چیت تھی کہ دارالعلوم دیوبند کو جس طریقے سے تنازع کا شکار بنایا جا رہا ہے کہ وہ انگریزی نہیں پڑھائی جاتی ہے، اس سراسر جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف ہے اور تمام پینلسٹ نے اس کا اظہار کیا ہے. ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی. وہ فریڈم فائٹر بھی تھے، مجاہد آزادی بھی، اور وہ خود انگریزی زبان کے قائل تھے. انہوں نے خود کہا انگریزی زبان سیکھنا ضروری چونکہ وقت کی زبان ہے. ہاں، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی ایک کورس پہلے مکمل ہو تب دوسرا کورس کیا جائے، ایک ساتھ سب کچھ نہیں کیا جا سکتا. مولانا محمد قاسم نانوتوی نے یہی دلی میں ایک اسکول ہے انگلو عربک اسکول، وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی. ان کے ساتھی تھے سر سید احمد خان اور دونوں کے استاذ تھے مولانا مملوک علی نانوتوی. تو پوری تاریخ ہے، پورا بیک گراؤنڈ ہے اور
حقیقت کو بیان کرنے کے لیے, کسی بھی نیوز کو دکھانے کے لیے, کسی پر تنقید اور تبصرہ کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے تاریخ کا پڑھنا ضروری ہے. تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے ہمارے لیے وقت نکالا, ساتھ دیا اور اس شو کا حصہ بنے. خاص طور پر مولانا برہان الدین قاسمی صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے ممبئی سے. آپ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے ڈاکٹر اجمل قاسمی صاحب, آپ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے شعبہ عربک ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ہمارے ساتھ امریکہ سے جڑے تھے مولانا افسر علی قاسمی صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کانپور سے جڑے مولانا عبد الرشید قاسمی صاحب, آپ حرف کے ڈائریکٹر ہے, یعنی ہائر ریسرچ ایجوکیشن سینٹر کچھ فل فارم ہوگا. اس کے علاوہ حفظ الرحمان قاسمی صاحب ہمارے ساتھ جڑے دلی سے. مولانا مدثر احمد قاسمی صاحب الغزالی انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹر ہے, آپ ارریہ سے ہمارے ساتھ جڑے. تو اب تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ سب نے ہمیں جوائن کیا, اپنا وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں آپ سب شریک ہوئے. اب تمام ناظرین کا, آڈینس کا بہت شکریہ کہ آپ سب 1.5 گھنٹہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور آپ سب کی محبتوں کی وجہ سے آپ سب لگاتار ہمیں دیکھ رہے, تو ہم نے 1 گھنٹہ کے بجائے 1.5 گھنٹہ تک اس شو کو آگے بڑھا دیا. بہت شکریہ. آپ سب اسی طرح ملت ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے, ہمیں دیکھتے رہیے. شکریہ. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے, سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو, ہندی, انگریزی, بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں. ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے, آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے, تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں. ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز. ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز, نفرت کے خلاف جنگ, فرضی خبروں سے نجات. www.millettimes.com